Good morning, students. Today we are going to start our new module, that is overheads. Let us discuss with the meaning of overheads. The third important element of cost is of any product or service is overheads. Total cost of a product involves direct cost and indirect cost. Direct cost can be conveniently identified with the product manufactured. It includes direct material, direct wages and direct expenses. As we have discussed in our first basic module, that is the introduction of cost accounting, that the cost is consisting of three basic elements, that is the direct material, direct labor and overheads. So this overheads related with what, that the indirect cost. Clear? As we direct cost हम लोग conveniently identify कर सकते हैं. Direct cost means जो directly product को process करने के time पे use होती है, that is the material. डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोसेस के टाइम पे प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे यूज होता है. देन वेजेस, वर्कर्स जो प्रोडक्शन करते हैं. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जो मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके आने के लिए, दैट कॉल्ड कभी रॉयल्टी पे करते हैं हम लोग गवर्नमेंट को. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर्स का हम लोगों को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो फॉर दैट वी हैव द बेसिक रॉ मटेरियल वुड. क्लोथ बनाना है तो बेसिक रॉ मटेरियल इज द कॉटन. सो दीज आर ऑल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वी हैव टू पे रॉयल्टी to the government because the forest is the property of government. So this is counting as an direct expenses. After that material जब बन जाता है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, दैट इज द फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, उनको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट. क्लियर? सो दिस इज व्हाट इट इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई. कितना लगता है, कौन सा कॉस्ट लगता है. किसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग ज्यादा लगता है तो किसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग नहीं लगता है. विद द ब्रांड नेम वो सेल हो जाता है. कंज्यूमेबल गुड्स रहते हैं, वो इजीली सेल होते हैं. सो दिस व्हाट इट इज क्लियर हियर, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. कि कोई भी हम लोगों को प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन करते हैं, दैट कॉस्ट इन्वॉल्व टू कॉस्ट्स, दैट इज द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. Direct cost can be conveniently identified with the product manufactured, and the direct costs include that the direct material, direct wages and direct expenses. Indirect cost cannot be identified with the product manufactured. It is clear that कि indirect cost जो रहता है वो immediately हम लोग identify नहीं कर सकते हैं. Such indirect cost is known as overheads. Clear किया? The such indirect cost is known as overheads. Simply, overheads are sum of all indirect expenses. Now the sum of all indirect expenses, तो sum कौन से हैं? That is the, therefore that is the overheads equals to indirect material, indirect labor and indirect expenses. These are the indirect material, means after the जो process होता है तो indirectly कोई material, for example if हम लोग कोई that product बनाते हैं, उनको fragrance देना है या उनमें कुछ chemical add करना है, that is coming to the extra material. labor लगता है after complete, फिर उनको हम लोगों को dye में shape देना है या उनको हम लोगों को packing करना है, that is called the indirect labor. Then administrative expenses की order लेना है करके तो administration expenses. Then salesman expenses, commission देना रहता है salesman को, तो these are all coming in the indirect expenses. So here the next topic is the definition of overheads. First definition given by the Institute of Cost and Management Accountants, London. According to this definition, the aggregate of indirect materials cost, indirect wages cost, this is related with the labor cost, and indirect expenses.
So again, according to this definition, it is very clear that the overhead is consist of only the indirect costs, that is related with material or related with wages or related with other expenses. Next definition is given by Blocker and Waltmer. According to this definition, overhead costs are operating costs of business enterprises which cannot be traced directly to a particular unit of output. The term overheads is used interchangeably with such terms as burden, supplementary costs, manufacturing expenses and indirect expenses. So according to here, two main points are clear. First, the overhead cost is or operating cost, and overhead cost is considered as the supplementary cost, burden, or the means extra cost or manufacturing cost and indirect expenses. So here is the next topic related with overhead is very important topic, classification of overheads. Now the classification of overheads is divided into the three main classes, that is the element wise, function wise and behavior wise. So let us discuss one by one. First is the element wise. Under this element wise, there are the three main elements: indirect material, indirect labor and indirect expenses. Now the function wise, factory overheads, office and administrative overheads, selling and distribute overheads. As already discussed, this is related with the overheads. Indirect cost जो भी लगता है other than the direct cost, material, labor and other direct expenses, ये होते हैं prime cost. प्राइम कॉस्ट के बाद जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर इन योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट में आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. नाउ हियर इज ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थियोरी एज वी ऑलरेडी डिस्कस. अगर आप लोग फर्स्ट हमारे यूनिट इन आई थिंक इन थर्ड और द फोर्थ लेक्चर वी हैव डिस्कस द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ costs. Under that we have also discussed these costs, that is the function wise and behavior wise the costs. Here we are discussing this topic related with the overheads. Now behavior wise, variable overheads, fixed overheads, semi variable overheads. So let us discuss one by one in detail. So the first classification of the overheads is based on that the element wise classification. Under this we have discussed that the three main topics, three main elements of the overheads. First is indirect material. It is the cost of material which cannot be directly charged to the product manufactured. Directly product को जो manufactured होता है directly हम लोग उसको charge नहीं करते, add नहीं करते. It includes storage consumed, repairs and maintenance, small tools of journal use, lubricant oil, cotton waste, loss of stores etc. Clear? So यहाँ पे clear किया कि whatever जो extra cost होता है, now the store consumed, कितना store consume हुआ करके, तो store consume is not only a particular unit के लिए, फैक्ट्री में बहुत सारे अलग processes भी होते हैं, तो एक single के लिए वो cost material direct नहीं होता है, that is called the indirect material. Clear? Now next is what it is charged the another, that is the repairs and maintenance, small tool, that is the अगर suppose कोई हम लोग डाइस या मशीनरीज का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मशीनरी बनाने के लिए बहुत सारे नट टूल्स लगते हैं, या दैट इज द सम बोल्ट्स, नट बोल्ट्स को हम लोगों को फिक्सिंग करना होता है, इंस्टॉलेशन करना होता है, तो दिस इज व्हाट लुब्रिकेंट ऑयल उनको फ्री बनाने के लिए, क्लियर कर देन कॉटन वेस्टेज और द लॉस्ट ऑफ दैट इज द स्टोर्स एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज indirect labor. It is the cost of labor which cannot be directly charged to the product manufactured. Means it is what कि directly labor वहाँ पे work नहीं करती, कि जैसे पहले direct labor का मतलब क्या होता है, that what कि जो immediately raw material को finish goods convert करे. Here is what indirect labor, जो क्या करते हैं after the जब product बन जाता है, that is finishing, packing charges करना होता है या उनको coloring. So this is what the indirect labor cost. So these are also include
इंक्लूड कि इनको सैलरी और वेजेस दिया जाता है, दैट इज सैलरी एंड वेजेस फॉर द मेंटेनेंस वर्कर्स जो मेंटेन करते हैं. नॉट स्टोरेज, जो स्टोर रहता है, स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉक को मेंटेन करते हैं. तो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगता है. लोडिंग अनलोडिंग, आफ्टर जब फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाता है, मार्केट तक लेके जाने के लिए ट्रक में जो लोडिंग अनलोडिंग लेबर करते हैं, दे आर कमिंग टू द एक्स्ट्रा, दैट इज द इनडायरेक्ट लेबर. देन दैट पेइंग ओवर टाइम, हॉलीडे पे, आइडल, वॉट एवर कॉस्ट, जो भी लेबर को कॉस्ट लगता है, दैट इज कमिंग इन द indirect labor cost. Next, indirect expenses, the expenses which are incurred for the business as whole. Clear यहाँ पे concept. Indirect expenses means the expenses which are incurred for the business as a whole, they cannot be directly charged to the product manufactured. For example, rent, taxes, insurance, light and heating, depreciation of building. So here is what clear. Now see, if we are paying the rent of the factory building, फैक्ट्री बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लोर की फैक्ट्री बनी हुई है. एक फ्लोर पूरा स्टोरेज के लिए दिया है, एक ऑफिस के लिए, एक वेयर हाउसिंग के लिए, देन नेक्स्ट इज स्टोरेज गिविंग ओनली स्टोरेज. तो पूरा का पूरा रेंट एक ही डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जहाँ पे मशीनरीज हैं, प्रोसेस होता है, तो वो एरिया जितना ऑक्यूपाई किया है उतना ही रेंट उनको एलोकेट होगा. जितना एरिया दैट इज द सेल्स रिलेटेड विद द वेयर हाउसिंग चार्जेस कमिंग टू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो उतना उनको रेंट ऑक्यूपाई किया जाएगा. स्टोर डिपार्टमेंट में दैट इज कमिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव. सो दीज आर ऑल व्हाट की रेंट, टैक्सेस और इंश्योरेंस जो डायरेक्टली हम लोग एट अ लमसम पे करते हैं, तो उनको बाद में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. सो दिस इज कमिंग इन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ द नेक्स्ट one related with the classification, that is the functional classification. Now the functional overheads are classified into factory overheads, office administrative overheads, and selling and distribution overheads. Now the factory overheads is actually manufacturing overheads. Clear? So this is what another word. फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोला जाता है. देन इज द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, while other two are the non-manufacturing overheads. So concept is clear that the factory overheads means what, that the manufacturing overheads, and other two are the non-manufacturing overheads. Factory rent and taxes, indirect wages are examples of factory overheads, while salary of office staff is an example of the office and administrative overheads, and commission of salesmen is an example of selling and distribution overheads. Clear? जो पूरे प्रोडक्ट को आफ्टर द कंप्लीट प्रोडक्ट पूरा फिनिश नहीं होता, लेकिन अगेन देयर आर सम नीड टू रिफ्रेश दैट द प्रोडक्ट को कुछ केमिकल दैट द प्रिजर्वेटिव्स या सम एज वी आर टू कलरिंग, सो इट इज कमिंग इन द फैक्ट्रीज में आता है, फर्दर वो प्रोसेस होता है. तो दिस इज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स काउंट किया जाता है. देन अगेन दैट इज द हैंडलिंग, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उनको दैट इज व्हाट द ऑफिस स्टाफ सैलरी दी जाती है. देन दिस इज कमिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. कमीशन टू द सेल्समैन प्रोडक्ट को सेल्समैन करने के लिए, दैट इज द एडवर्टाइजिंग करने के लिए, दैट इज द सेल्समैन को जो कमीशन पे करते हैं, दैट इज द कमिंग इन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. Now the next classification of overheads, that is the last one, behavioral classification. So this behavioral classification, on the basis of behavior, overheads can be classified as variable overheads, fixed overheads, and semi-variable overheads. As this topic is already discussed in our first module, that is the introduction of cost accounting. Variable overheads means what, जो vary, that is the changeable with the increase of production. जितना आप unit बढ़ाएंगे, that is the changes with the unit, they are changes with the per unit.
फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम बाय द अमाउंट दैट इज कॉल्ड द रेंट. अभी जैसे रेंट हम लोग पे करते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग का, सो दिस इज व्हाट कि अब फैक्ट्री बिल्डिंग में डे में काम करो या नाइट में भी काम करो, रेंट तो क्या है उतना ही पे करना है, वेदर काम हो या नहीं हो, वी हैव टू पे द रेंट. देन सेमी वेरिएबल कि कुछ लिमिट रेंज तक ये एक्सपेंसेस क्या रहते हैं फिक्स, देन आफ्टर चेंज ऑफ द सम रेंज, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज द टेलीफोन. So variable overheads are those overheads that vary in direct proportion with the level of activity. Means जो जितना level of activity बढ़ेगा उतना variable overheads भी increase होंगे. For example, indirect wages, then salesman commission. Fixed overheads are those overheads that remain fixed irrespective of the level of activity. कौन कितनी भी level of activity होने दो, the fixed overheads are always fixed with a relevant range. For example, factory rent. Then semi-variable overheads are those overheads that vary with the level of activity but not in a direct proportion. So यहाँ पे clear किया, तो these overheads are the vary with the level of activity but not a direct proportion. They are the fixed some proportion कि for example कि 100 यूनिट तक इतना ही हम लोगों को overheads, आफ्टर 100 यूनिट एक भी यूनिट अगर हम लोगों ने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे इंक्रीज. सो एग्जांपल्स आर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस.